हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसवाईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग न्यूलैंड लैब्स की जो एनुअल रिपोर्ट है उसका एनालिसिस करेंगे एंड साथ साथ जो टाटा एल्क्सी की एनुअल रिपोर्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। एंड आने वाले टाइम में जितनी जितनी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट आ रही है, जैसे सिंजीन हो गया, लॉरस लैब्स हो गया, टाटा कंज्यूमर की भी करेंगे एंड साथ साथ एशियन पेंट्स की भी जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी हम ट्राई करेंगे कि आपके साथ एनालाइज करें। तो यहाँ पे हमने तिजोरी फाइनेंस खोल रखा है। तिजोरी फाइनेंस में एक बहुत ही अच्छा एरिया है विच इज ओन बाय द नेम ऑफ नॉलेज बेस। नॉलेज बेस के अंदर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कंपनी की जो कंपनी फाइलिंग्स है वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी अलॉन्ग विद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग्स रिलीज, कॉन्फ्रेंस कॉल एंड एनुअल रिपोर्ट। एंड मोर ओवर डिस्कशन एंड एनालिसिस में जो भी उसके की सोर्सेज होंगे वो आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एसओआईसी की जो वीडियो आई थी न्यूलैंड लैब्स पे, आपको वो भी मिल जाएगी। सो जस्ट कमिंग टू दिस, तो इनकी 2021 की एनुअल रिपोर्ट आ गई है, तो एक बार उसको ओपन करते हैं। And this is the annual report of the company. Now let's start reading the annual report and इसमें क्या key insights है एक बार वो देखते हैं. And apart from that, I think the key lesson to take away from this whole annual report review is that we have to view a company as an evolving movie and not as a static picture. So we look into the annual report and we'll also see कि what are the key metrics that are happening in this business. हमें कैसे पता as an investor क्या हम सही हो रहे हैं, क्या हम गलत हो रहे हैं अपनी एक इन्वेस्टमेंट में। तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का पर्पस ही वही रहता है काफी बारी, क्योंकि की हिडन इनसाइट्स एनुअल रिपोर्ट में मिल जाती है जो कभी कभी कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी नहीं बताती। So just before we start, so let's look at the contents of the annual report. And the purpose is to basically give you a broad qualitative view. तो जो भी qualitative view है, जो भी key metrics हैं, उसकी हम बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट में। ब्रीफली विल टच ओवर ऑल द फाइनेंशियल्स। सो बेसिकली जो नोट रीडिंग है, एकदम उसकी इन डेप्थ नोट रीडिंग है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज आई थिंक जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं फ्रॉम एन एनुअल रिपोर्ट, दैट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू गैदर वंस योर वर्क इज डन इन अ कंपनी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कॉर्पोरेट ओवरव्यू। राइट, सो बेसिकली यहाँ पे कंपनी का जो कंटेंट है, इंडेक्स है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अस, कंपनी की जो जर्नी है, executive chairman's message, and in conversation with Suchit, who's the vice chairman and the CEO, and in conversation with Saharsh. So basically ये जो इस कंपनी का जो CEO and MD है, उनके साथ basically Q&A होता है हर बारी एनुअल रिपोर्ट में, which is something which I really like. Then board of directors, financial highlights, and then we'll be looking at the MD&A, that is the management discussion and analysis. Along with that, we'll also briefly touch upon some of the key audit issues. एंड आई थिंक एक एसओआईसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ा था, तो उनका जो क्वेश्चन है मैं वो भी आंसर कर दूंगा। एंड साथ साथ दिस इज हाउ द टोटल रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी लुक्स लाइक बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21। द कंपनी हैज रिपोर्टेड 953 करोड़ ऑफ प्रॉफिट along with 162.5 crore of EBITDA, along with almost 80 crores of profit after tax over there, right? So these are just the basic financial metrics. and एक बार नीचे चलते हैं पढ़ने के लिए और क्या चल रहा है यहाँ पे। So this is the basic corporate information of the company, and this is about us page कि न्यूलैंड establish कैसे होता है and न्यूलैंड करता क्या है, right? तो जैसे हमने न्यूलैंड की वीडियो में चेक करा था कि न्यूलैंड basically is an API manufacturer, ये active pharmaceutical ingredient manufacture करता है। और उसके साथ साथ न्यूलैंड क्रैम्स का बिजनेस करता है, that is contract research and manufacturing services का, जिसको ये CMS के बिजनेस से बोलते हैं। और यार यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, तो आई थिंक ये यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज दीज आर द क्वालिटेटिव इनसाइट्स जो हम लोग एनुअल रिपोर्ट्स में ढूंढते हैं। दैट दे से दैट वी हैव 3 वर्ल्ड क्लास API manufacturing facilities capable of handling complex and hazardous reactions. The manufacturing facilities comply with all the regulatory guidelines and requirements of current good manufacturing practices and have been successfully inspected, approved by international health and regulatory agencies. Our facilities have successfully cleared 15 US FDA audits, right? So how many audits they have cleared? 15 US FDA audits. So this becomes a key qualitative insight for me. This becomes a key qualitative insights for me that this company has been able to successfully clear the regulatory audits of US FDA, which are very, very stringent in nature. तो ये एक हमारी क्वालिटेटिव इंसाइट है जो हमें समझनी चाहिए कि कंपनी शायद से कल्चरली काफी कंप्लायंट है in terms of dealing with US FDA, या फिर कंपनी की जो क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है काफी ज्यादा है, राइट? तो एक फार्मा बिजनेस में ये की मेट्रिक जरूर देखने की जो US FDA है उसका कितना ऑब्जर्वेशन आया, पास्ट में कोई इश्यूज आए या नहीं आया। एंड फॉर द रिसेंटली कमीशन यूनिट 3, तो अभी कंपनी पास यूनिट 1 है, राइट, यूनिट 2 है, एंड रिसेंटली कंपनी ने जो यूनिट 3 है उसको भी कमीशन करा है। So we are working with US FDA to expedite the inspection and the approvals for commercial manufacturing of APIs.
So basically they are working with US FDAs for inspection and approval for manufacturing APIs, right? So again becomes very very interesting. एंड लेट्स जस्ट रीड मोर कि और हमें क्या क्वालिटेटिव इनसाइट्स आती हैं। तो हमारा जो SOIC का बिजनेस रिस्क एंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, अभी हमें बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में पता लगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव इनसाइट्स कि US FDA की एटलीस्ट 15 इंस्पेक्शंस इन्होंने विदाउट एनी लाइक एडवर्स ऑब्जर्वेशंस क्लियर करी हैं, व्हिच इज डिफिकल्ट टू फाइंड इन अ लॉट ऑफ फार्मा कंपनीज, राइट? आरती ड्रग्स की बात करें तो आरती ड्रग्स का भी जो US का प्लांट है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रखी है US FDA की। यहाँ तक अगर मैं इप्का लैब्स की भी बात करूँ तो इप्का लैब्स पे भी एक प्लांट में जो US FDA उसकी ऑब्जर्वेशन आ रखी है। नाउ जस्ट लुकिंग एट दिस, तो ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे इनको सर्टिफिकेशन मिली है। एंड दिस इज वेयर थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग। जैसे हमने अपनी न्यूलैंड की वीडियो में बात करा था, वी हैव टू लुक एट द रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अभी 28% इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, 47% इज प्राइम बिजनेस, 22% इज नीश बिजनेस। प्राइम बिजनेस मोर और लेस हैज एलिमेंट्स ऑफ अ कमोडिटी बिजनेस, तो ये हमें लगता है कि इसमें कमोडिटी बिजनेस के एलिमेंट्स हैं। दिस इज रियल वैल्यू एडिंग एंड दिस इज ऑल्सो रियल वैल्यू एडिंग बिजनेस। अगर इनका पोर्शन एज अ मिक्स पूरा बढ़ता है then margins will start expanding। and जो हमारी thesis है इस कंपनी के अंदर, that this company is moving from a commodity player, right, to a value added API producer and a CDMO business to a value added player. So this is the thesis in the business. This is the thesis, that is the key narrative. So let's see if it can happen or not, because क्योंकि custom manufacturing services जो हम CDMO की बार बात करते हैं, तो किसी को इसको समझना है तो आप हमारी सिंजीन की वीडियो देख सकते हैं। तो ये बिजनेस एक्चुअली थोड़ा सा लंपी बिजनेस है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लंपीनेस रहती है। तो यहाँ पे पर अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से, तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो प्राइम बिजनेस हैज रिमेन्ड 46-47%, पर जो CMS का बिजनेस है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 3%, whereas niche बिजनेस एटलीस्ट 1% से फॉल करे। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी रहेगी इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि लंपी बिजनेस है। बट हमारे की मेट्रिक्स क्या है इस बिजनेस में ट्रैक करना, कि जो CMS बिजनेस है एज अ परसेंटेज ऑफ द इंटायर रेवेन्यू बास्केट, कि ये इसका परसेंटेज कितना इंक्रीज होता है CMS का। तो लेट्स जस्ट रीड। और यहाँ पे क्या है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे डॉट्स कनेक्ट होती है, क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट पूरा पढ़ रखा है इन डेप्थ, तो हमारे लिए डॉट्स कनेक्ट करना काफी ईजी हो जाता है। So these are the two business divisions जैसे हमने बात करती है। एक तो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो इस बिजनेस में दे केटर टू इनोवेटिव फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज थ्रू एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NCE APIs। माने न्यू केमिकल एंटिटीज जो हमने जैसे बात करी है, जो इनोवेटर कंपनीज हैं जो मॉलिक्यूल्स पे R&D कर रहे हैं, उसके लिए CMS बिजनेस या फिर CRAMS बिजनेस बेसिकली आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है। फिर जो इनका जेनेरिक ड्रग सब्सटेंस बिजनेस है, अब ये है इसके ना दो API के बिजनेस आते हैं, एक तो प्राइम API का बिजनेस एंड एक स्पेशलिटी API का बिजनेस। स्पेशलिटी API का बिजनेस आपका जो नीश वाला बिजनेस है वो है। तो यहाँ पे लो वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्स APIs है, whereas प्राइम APIs आर हाई वॉल्यूम एंड मैच्योर APIs। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अच्छे से अगर एनुअल रिपोर्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ कि व्हाट डज इट बेसिकली मीन। तो आई थिंक जस्ट ओवर हियर, राइट? So these are this is the distinguishment. So this is the differentiating factor between complex APIs and the generic APIs. So generic APIs में basically API की value chain कैसी है, कुछ कस्टम हमारे पास की starting material है, then उसके बाद हमारे पास intermediates आते हैं, then हमारे पास उसका API आता है, then उसका formulator आता है। Formulator is the end consumer, right? So basically it's a B2B business, manufacturing of APIs. सो जेनेरिक API में क्या होता है कि एक फॉर्मुलेटर है, एंड फॉर्मुलेटर के पास काफी सारी चॉइसेस हैं कि कहीं से भी मैं API ले सकता हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अप्रूव्ड फैसिलिटीज एंड लॉट ऑफ अप्रूव्ड DMFs। व्हेयरएज कॉम्प्लेक्स API में क्या होता है दैट फॉर्मुलेटर एक्चुअली द सप्लाई चेन द सप्लाई साइड डोमिनेंस चेंजेस, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स API है इसमें सिंस देयर आर कॉम्प्लेक्स टू प्रोड्यूस, सो देयर आर वेरी फ्यू API प्रोड्यूसर्स, which helps the business to actually maintain higher prices, but it is lower volume in nature। तो यहाँ पे lower volume है and higher value है, which is opposite of generic API। but generic API में भी exceptions है, जैसे कंपनीज लाइक Divi's Laboratories जिन्होंने generic API में भी ऐसे entry barriers build कर दिए, but this is the basic difference between the two। And just moving forward with the annual report,
तो आई थिंक ये जो डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड द थीसिस बिहाइंड द बिजनेस. And again, just coming down, so over here this is the like key metrics of Newland. तो यहाँ पे आज तक इन्होंने क्या क्या करे. Basically, company has more than 37 years of experience. They operate in more than 80 countries. They have 75 APIs which have scaled up across 10 therapeutic categories. So different therapies है. Newland CNS में काफी strong है. That is central nervous system. And साथ साथ different therapies होती है. So there are therapies for anti-diabetes. There are more therapies, right? So the one therapy is known as cardiovascular, जो माने heart की disease के लिए होता है. तो न्यूलैंड सीएनएस के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो भी थेरेपीज है. देन एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी न्यूलैंड की कुछ 860 किलोलीटर्स के आसपास है, जिसमें से यूनिट 3 की अभी हम देखेंगे. आई थिंक यूनिट 3 जो रिसेंटली कमीशन्ड है उसकी 230 टू 250 के बीच के आसपास है. तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1/3 कैपेसिटी यूनिट 3 के अंदर है. फिर 57 एक्टिव डीएमएफ्स है यूएस के अंदर, एंड देयर आर मोर देन 1427 एम्प्लॉइज. And more than 75% of the revenue comes from exports, and there are 898 drug master files across the world for Newland Labs, right? So just going down, so this is their geographical breakup of their business, and this is how their journey looks like. So this is the timeline of the business which is mentioned over here. So यहाँ पे just before I go further, यहाँ पे one thing which I would like to mention is that one of the API which they sold, the first API that they sold was salbutamol. So salbutamol is an API used for respiratory diseases, and they're still selling salbutamol, right? So even in this business, sometimes the rate of change is really slow. If that therapy is still in usage, if that API is still effective. So salbutamol is one of those APIs which is being sold for almost last 35 years now. So just to give you an idea कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर भी रेट ऑफ चेंज काफी स्लो है. जस्ट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, विनिधी ऑर्गेनिक्स के केस में जो आइबुप्रोफीन है, आइबुप्रोफीन इज देयर फॉर ऑलमोस्ट लास्ट सेंचुरी, राइट? सो रेट ऑफ चेंज इज स्लो इन दिस इंडस्ट्री. And apart from that, let's just look at this. So one key thing which has happened over there is the commercialization of Unit 3 in 2021. And यहाँ पे आज प्रॉब्लम क्या चल रही है न्यूलैंड के केस में कि कुछ क्लोज टू 250 crores of capital is employed on the balance sheet, which is earning next to nothing revenues, right? So it is barely earning any sort of revenues because this is all deployed in Unit 3. So such amount of capital is there in Unit 3, and let's see what happens, because abhi to it could be like a Laurus Lab story where substantial amount of capital was deployed in fixed assets, but उस टाइम पे revenue generate नहीं हो रहा. तो जैसी revenue generation start हुई, operating leverage kicked in, and we saw what happened. किसी को ऑपरेटिंग लेवरेज समझना है तो हमने लॉरेंस लैब्स की पहले 5 मिनट का जो है वीडियो के, उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का फिनोमेना बहुत डिटेल में समझाया. जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, राइट? So we are applying our framework of business risk and management, and let's just read the executive chairman's message. So basically this is the so this person is the founder of the company, and इनके जो 2 बेटे हैं आज उन कंपनी को वो चला रहे हैं. एक कंपनी का MD है, एक कंपनी का CEO है, एंड इनका एक बारी जो लेटर है एक बारी वो हम पढ़ते हैं पूरा, एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू गेट सम क्वालिटेटिव इनसाइट्स. So again, over here they mentioned about COVID and their priority of protecting people. But from here, let's start reading. And our performance was driven by growth in both the businesses verticals of generic drug substance and custom manufacturing services. While the uptake in GDS business was led by customer acquisition and our continued effort in product lifecycle management, the CMS business is seeing the fruition of our sustained focus on building strong customer relationships and the right pipeline of projects. The right pipeline of projects they're mentioning and the right customer relationship they're mentioning. Much of the credit for our success also goes to our strong, well-balanced teams across functions who worked closely to serve business customer needs in an extraordinary year. As we look to the future, we believe that continued emphasis on growing our capability, fostering cross-functional collaboration, and driving continuous improvement makes us well positioned to scale business growth. So basically, again, so some of it is like very generic. So basically, that they're working on all the 3 lines of businesses. But my focus, so every investor has to be focused on their own thesis. So my entire focus throughout this annual report will be on the CMS business.
my focus is more on the CMS business because that is a key part of my own thesis. So everyone can have a different focus by leading the annual reports, but आपको पता होना चाहिए कि आपको फोकस किस चीज पे करना है. मेरा फोकस कैपेक्स प्लान्स पे होएगा, मेरा फोकस सीएमएस बिजनेस के ऊपर होएगा, मेरा फोकस ये होएगा कि मार्जिन एक्सपेंशन के लीवर्स क्या है इस बिजनेस के अंदर. बिकॉज अगर मार्जिन एक्सपैंड होंगे तभी आरओसी एक्सपैंड होगी, अगर आरओसी एक्सपैंड होगी तभी बिजनेस की जो क्वालिटी का परसेप्शन है इन्वेस्टर्स की आइज में बढ़ेगा, एंड जैसी परसेप्शन बढ़ेगा तभी इवेंचुअली वैल्यूएशन बढ़ती है. So I think this is one key factor which you have to understand while reading annual reports or while thinking about businesses, right? So just moving here. So just a second. So business risk and management framework may again that our uncompromising commitment to quality, compliance, and safety underpins this customer focus. In this regard, the deep understanding of regulatory requirements that we have amassed by serving highly regulated markets for over 25 years, together with our intense focus on upholding the highest quality and safety standards in our operation, continues to be a key business differentiator. So again, a qualitative factor that for last 25 years, they have been serving the highly regulated markets. Regulated markets kaun si hai? Just to give you an example, Japan, Europe, and USA. Also, to a certain extent, the Canadian market as well. तो ये 3 ज्योग्राफीज जो काफी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, न्यूलैंड लास्ट 25 ईयर से यहाँ पे सर्व कर रहा है. जापान में लेट एंटर करा था, बट यूरोप एंड यूएस के अंदर काफी सालों से सर्व कर रहे हैं. तो ये हमें क्वालिटेटिव इंसाइट दे रही है कि बिजनेस एक्चुअली में इवन दो स्मॉल कैप बिजनेस है, बट एस्पिरेशंस या फिर क्वालिटी बिजनेस की लार्ज कैप या मिड कैप वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेगुलेटेड मार्केट्स को सर्व कर रहे हो. सो जस्ट सेकेंड, जस्ट रीडिंग फॉरवर्ड. So यहाँ पे they mention about their GDS business, and so GDS business थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे because जो बाकी CEO है and जो MD है उसकी कमेंट्री को भी हमने पूरा पढ़ना है. So again यहाँ पे interesting thing comes in that guided by foresight of our management team, we have been proactively pursuing supply chain diversification for the past few years to reduce our dependence on any single geography. So basically, Newland, for manufacturing APIs, it has to get intermediates from somewhere, right? And to manufacture API, मेरे को अपना raw material कहीं और से, जो मेरा key starting material है वो भी मेरे को कहीं और से लेके आना पड़ेगा. अब न्यूलैंड के बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आई थी 2017-2018 में? तो आई थिंक दिस वाज द की प्रॉब्लम कि दे वर 60% डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर रॉ मटेरियल. And let's just see what happened to their margins जब raw material की जो volatility है that actually struck the business. तो यहाँ पे it becomes interesting because वो न्यूलैंड का जो stock collapse हुआ था, I think from 1600-1700 crore market capitalization, the stock collapsed somewhere close to 300 to 400 crore market capitalization, or maybe 600-700 crore market capitalization. So any business has to be viewed as an evolving story. If you view it as a static picture, again my point is कि you will miss it completely, because see everything is probabilistic investing. हमेशा क्या दे बोलना चाहिए हमें, क्योंकि we are dealing with probabilities, part of the reason. हमें हर चीज में ये नहीं बोलना चाहिए कि 100% यही रीजन था, but part of the reason why it collapsed or why the stock price went down is that there were 3 black swan events. First black swan event was disruption in supply chain, right? Second black swan event was that जो disruption in supply chain के अलावा they got different orders. माने जो उनकी capacity mismatch हो गया था, capacity किसी चीज की थी और orders किसी और चीज के आ गए. And third and final part of the reason was that the company was in midst of capex. तो capex भी कर रहे थे, साथ जो capacity mismatch भी हो गया, and साथ एक और disruption क्या आ गई कि raw material की disruption आ गई. अब समझते हैं कि ये बिजनेस को फ्रेजिलिटी से एंटी फ्रेजाइल बनाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं. चलो एंटी फ्रेजाइल नहीं बनता, अगर रोबस्ट भी बन गया तो एज एन इन्वेस्टर हमारा काम हो जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं कि इबिटा मार्जिन्स कैसे कोलैप्स करके थे, राइट? सो जस्ट लुक एट द इबिटा मार्जिन्स कोलैप्सिंग 6.5, 9, 9.5, 11.3, 10.5, and ever since then they have started rising back again. So what have they done to correct this is, first thing, इन्होंने अपनी कैपेसिटीज को फंजिबल बना दी. आज अगर हम डीवीज जैसे बिजनेस को देखें तो डीवीज जैसा बिजनेस क्यों जीत जाता है, राइट? इतना मतलब आज 1-1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों मिल गया? बिकॉज टोटली ऑल द कैपेसिटीज आर फंजिबल. फंजिबल माने
बहुत सिंपल टर्म्स में इसको समझना, फंजिबल का मतलब कि मैं कोई भी तरीके का एपीआई उस रिएक्टर पे बना सकता हूँ। Whereas नौ पहले इनकी कैपेसिटीज नॉन फंजिबल थी, मतलब कुछ टाइप के ही एपीआई मैं उस रिएक्टर पे बना सकता हूँ। तो पहला जो ब्लैक स्वान इवेंट था दैट हैज बीन डन अवे विद, कि अब मेरे को कैपेसिटी मिसमैच की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ माय सिंस माय कैपेसिटीज आर फुल्ली फंजिबल। सेकंड थिंग, what is the second thing? Raw material dependency of 60% on China. Now that has come down to 20%, तो 40% का रिडक्शन आया। Q4 FY21 में इनके जो रिजल्ट्स है उस पर इम्पैक्ट आया था, बिकॉज अगेन सप्लाई चेन डिफिकल्टीज आई थी। बट अगर इनकी सप्लाई चेन आज भी वैसी होती जो 2016, 17, 18, 19 के आसपास थी, शायद से इन वापस हमें 6.5 या 9% का एबिटा मार्जिन देखना पड़ जाता, राइट। बट राइट नाउ एबिटा मार्जिन्स हैव कम डाउन टू 13, 14, 15% के आसपास इन द Q4 of FY21. So again, robustness being added to the business. What is robustness or what is anti-fragile? Suppose मेरे सामने एक दीवार है, मैं उस पर बॉल मारते जाऊं, बॉल मारते जाऊं, बॉल मारते जाऊं, एंड अगर बॉल मारने से वो दीवार टूट गई तो माने वो दीवार काफी फ्रेजाइल थी। पर अगर मैं उस दीवार पे बॉल मार रहा हूँ बट वो दीवार काफी रोबस्ट रहती है, तो दैट इज व्हाट आई कॉल रोबस्ट। एंटी फ्रेजाइल क्या? अगर मैं उस दीवार पे बॉल मारते जाऊं, मारते जाऊं, मारते जाऊं, एंड वो बिजनेस एक्चुअली वो दीवार ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट, तो देन दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटी फ्रेजाइल। तो दिस इन वेरी सिंपल टर्म्स। एंड थर्ड यहाँ पे जो इनका की फैक्टर था, जो इनका यहाँ पे कैपेक्स चल रहा था यूनिट 3 में, तो दैट हैज आल्सो बीन कैपिटलाइज्ड। तो जो तीनों ब्लैक स्वान इवेंट्स थे दैट हैव बीन डन अवे विद, एंड maybe now we are seeing that journey from a commodity player to a value added business play out in next 2 to 3 years. Just coming back to the annual report, तो मैं आपको एसेंस बताना चाहता था बिजनेस का कि आज बिजनेस में ये है, तो एनुअल रिपोर्ट भी आपको इन्हीं आंखों से पढ़नी चाहिए, इन्हीं आईज से देखनी चाहिए, because at the end we are business analyst, we are not financial analyst, we are not stock analyst, we are business analyst. हमारा एडवांटेज क्या है इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट? Retail investors are actually very advantaged against institutions. Institutions have imperatives. माने कि एक म्यूचुअल फंड का इम्पेरेटिव होगा कि आज आप 3,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी नहीं देख सकते, 2,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी नहीं देख सकते, देख भी रहे हो तो मेरा फंड साइज ही 60,000 करोड़ है, तो मैं इसमें पैसे कैसे डालूं? Whereas we do not have that issue, right? We could have bought Laurus Labs at 5,000 crore market cap, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, right? So again, just a disclosure, we are not like we are not SEBI registered advisors, but just an insight that a retail investor has way more advantage than an institution, because we can be way more flexible than the institution. But we think बिकॉज हम लोग पूरे टाइम डरे रहते हैं मार्केट से, हम लोग बिजनेस एनालिसिस नहीं कर पाते, इस वजह से हमें डर लगते रहता है। एंड इस वजह से एक्चुअली अगर हम यूट्यूब पे भी देखते हैं तो नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट मोस्ट ऑफ द व्यूज आर गिवन टू द वीडियोस जहां पे लिखा होता है व्हाई डिड द स्टॉक फॉल बाय 2% और 3%। आई थिंक दैट इज प्योर वेस्टेज ऑफ योर टाइम इफ यू आर स्पेंडिंग योर ओन टाइम ओवर देयर, बिकॉज एज रिटेल इन्वेस्टर्स आप अपना सबसे बड़ा एडवांटेज नहीं उठा रहे बिजनेस के ऊपर बैठने का, राइट, जो काफी इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकती। Now, guided by the foresight of our management team, we have been proactively pursuing supply chain diversification. जैसे हमने बात करी, the business strategy has worked to our advantage, as reflected in our almost interruption-free operations and timely deliveries in the year when global supply chains were disrupted due to pandemic breakout. We have been accelerating the integration of technology in our operations to leverage greater efficiencies, and our strong focus in operational excellence is also evidenced in our team's effort to optimize and improve yields and lower costs, right? So basically अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे काफी स्पेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्चुअली देखेंगे भी इन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करें इनके एनुअल रिपोर्ट में। एंड सेकेंडली ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम बिजनेस को और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक और आई थिंक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब हम उसकी डिस्कशन करेंगे यूनिट 3 की, जो इनका थर्ड यूनिट लग रहा है इस टाइम पे। नाउ जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो मैं बिजनेस बारे में थोड़ा सा और पता लगा, तो आई थिंक यहाँ पे जो CMS प्रोजेक्ट है एक बार उसके बाद में भी हम पढ़ लेते हैं, जो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहता है। That looking forward, we are well positioned to benefit from our excellent product portfolio, strong CMS project pipeline, and growing capabilities. We are working towards enhancing our customer base in key markets of US, Japan, Europe, especially in the context of our CMS business, जो इनका CRAMS business है. Finally, we will use the momentum that we have generated over the years along with the learnings of the past to generate better value. Management realizes कि 2017-18 में बिजनेस के अंदर काफी बड़ी मिस्टेक्स हुई थी,
तो उस मिस्टेक्स को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर रोबस्टनेस आ जाएगी. एंटी फ्रेजिलिटी आती है नहीं आती वो हमें टाइम ही बताएगा. बट आई थिंक बिजनेस इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग पाथ इन टर्म्स ऑफ लाइक सिक्योरिंग देयर सप्लाई चेन. बट यहाँ पे एक की चीज जो विच आई डिडंट लाइक पर्सनली, बिकॉज मेरे को डिसकन्फर्मिंग एविडेंस भी देखना है, that management guided in the conference calls of last year that we will bring down our dependence on Chinese raw material below 10%, right? that हमारी जो Chinese raw material पे जो हमारा कॉस्ट है वो बिलो 10% आ जाएगा, हम जितना चाइना पे डिपेंडेंट है. बट अभी भी वो 20% है, वो बिलो 10% आया नहीं. सो बेसिकली दे हैव वॉक द टॉक. 60% से अब 20% आ गए, पर जो इन्होंने बोला था 10% आएगा वो फिलहाल अभी तक नहीं आया. एक बार उसका रीजन देखते हैं, उसकी क्या ये लोग टाइमलाइन दे रहे हैं, एक बार उसको समझते हैं. बिकॉज वॉकिंग द टॉक इज वन ऑफ द की क्वालिटेटिव क्राइटेरिया फॉर असेसिंग मैनेजमेंट. तो यहाँ पे वो चीज नहीं हुई, बिकॉज आई बीन ट्रैकिंग द बिजनेस फॉर लास्ट 18 to 20 months. तो ये चीज में मेरे को एक अच्छी नहीं लगी कि एक्चुअली में प्योर चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस अभी तक नहीं हट पाई. So just a second, just moving forward. So अब जो अब इस कंपनी के CEO हैं, right? So he is basically the son of the chairperson of this company, जिनका लेटर हमने अभी अभी पढ़ा था. तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं that what does he say, and actually में इनका जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमें काफी क्वालिटेटिव इंसाइट्स आएंगी, बिकॉज इनका एंड जो इनके भाई हैं तो उनका भी हम नीचे पढ़ेंगे, who's the MD of the company. तो दोनों का एक बार पढ़ेंगे and let's try to get as many qualitative insights as we can. So FY 2021 demonstrated the resilience and agility we have built into our business. Operating against the backdrop of a challenging environment, we achieved the targets we had set for ourselves. In spite of the challenges, we continued to invest for our future, and dedication, collaboration, and professionalism of our people enabled us to move fast and respond to a fluid situation. I convey my heartfelt appreciation to everyone at Newland, right? So basically, just a congratulatory type of note. So let's read what he has to say. So basically, this is sort of a Q&A. This is sort of a Q&A with the management. So please share your thoughts on company's performance for the year. So let's see what the company's what the person thinks. That Newland delivered a steady overall performance despite significant global disruption arising from pandemic in some of our end markets. Revenue at 953 crores is 24.3% improvement over the previous year. So business risk and management के framework में, in terms of business, in terms of financials, we can see that the revenues have grown by 24% mota. And so driven by a growth in the GDS and the CMS vertical. Our EBITDA has also registered an upward trajectory, increasing 54.3% over the previous year, right? So 54.3% growth आई है EBITDA के अंदर, 54.3% की. While the operating margin was up by 340 basis points, so 3.4% expansion आई है operating margin में. Change in business mix with higher margins from CMS business. तो मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ thesis क्या कि जो CMS business है इसका mix increase होना चाहिए. And certain specialty products along with cost optimization initiatives have helped to improve profitability, right? So now let's see what he tells us about the balance sheet. That our balance sheet position and underlying business fundamentals remain strong, right? So just a moment, I'll just erase this off. And we have continued optimizing the working capital and manage debt at moderate levels. तो हमें यहाँ पे एक चीज क्या देखनी चाहिए कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है उसमें क्या चल रहा है, कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू डेट है वो क्या चल रहा है. बिकॉज दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि जो लेवरेज रेशियोज है कंपनी की, क्या कंपनी कंफर्टेबली लेवरेज है या फिर बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज है, एंड कंपनी की ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल पोजिशन कहाँ जा रही है. So again, over here, the return on capital employed reached 12.82%, 18% excluding goodwill during the year as compared to 7.83% and 11.11% excluding goodwill. तो we have a student जिसका goodwill पे question था न्यूलैंड की, तो इसको हम मतलब बाद में डिस्कस करेंगे. But ex goodwill ROC is at 18%, with the goodwill ROC is at 13%. And in terms of key liquidity ratios, our net debt to EBITDA improved from 2.03% to 0.94%.
सो बेसिकली नेट डेट टू एबिटा हमें क्या बताता है कि अगर मैं अपना सारा एबिटा, राइट, इफ आई ट्राई टू पे ऑफ द डेट, तो मैं कितने टाइम में अपना एबिटा यूज करके जो डेट को पे ऑफ कर सकता हूँ। सपोज करते हैं 100 करोड़ की डेट है एंड 50 करोड़ का एबिटा है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट 2 सालों में अगर मैं एबिटा को सिर्फ यहाँ पे डाइवर्ट कर, पूरा पूरा एबिटा को सिर्फ यहाँ डाइवर्ट कर दूं डेट रिपेमेंट में, तो मैं मोटा मोटा 2 साल के अंदर अपने पूरे डेट को रीपे कर सकता हूँ। Whereas over here now what has happened in the business is that earlier this earlier this was close to 2.03, माने पहले ये रेशियो ज्यादा थी पर अब ये रेशियो कम हो गई है, which is a healthy sign. This indicates that the EBITDA of the business has grown and debt as a percentage has fallen as compared to the EBITDA. So basically business is showing healthy signs in leverage ratios. So current ratio जो current ratio is basically current assets to current liabilities. तो हमें ये मतलब ये बताते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कंडीशन कैसी है इस टाइम पे। तो current ratio has improved, has moved from 1.47 from 1.42. तो current ratio भी improve हो गई है business की। And debt to equity ratio moved to 0.22 from 0.37. So debt to equity, right? So again this tells us that how conservatively a business is financed. So this also becomes interesting because अब ये 0.22 के आसपास आ गई है, तो माने डेट अब इक्विटी का क्लोज टू अगर पहले अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देते हैं, सपोज करते हैं किसी कंपनी में 200 रुपीज की डेट है एंड 100 रुपीज की इक्विटी है, तो दिस इज 2 टाइम्स डेट टू इक्विटी। तो बेसिकली डेट इज इनफ टू वाइप ऑफ द इक्विटी, whereas a company has 20 rupees of debt and company has 100 rupees of equity. So basically this means that the debt to equity of the company is at 0.2 times. So this company is more conservatively financed than this one. तो न्यूलैंड के केस में अब हम कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल मेट्रिक्स में भी हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है along with the improvement in the business. The strategic direction we have followed in recent years with an increased focus on growing our capabilities and our CMS business without compromising on our generic drug substance strategy is driving our sustained performance. So basically जो मैंने आपको बात करी थी कंपनी के अंदर थीसिस क्या है कि CMS बिजनेस का बढ़ना चाहिए, तो पूरा एनुअल रिपोर्ट में मेरा फोकस क्या है कि एक तो क्वालिटेटिव इनसाइट्स आए एंड साथ में सेकंड फोकस क्या है कि जो CMS बिजनेस है उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो मेरे को समझ आने चाहिए, राइट। And our strategy remains unchanged as we continue to make the required investments well supported by healthy financial position, right? So let's see the second question of the Q&A, that in which areas could Newland have performed better? So this is always heartening to see that the management also understands that we have to improve as well. So while a performance hit the mark, there are areas where we did not deliver as per our expectations. देखते हैं क्या क्या areas हैं, तो business risk management में this is about the management that they are being candid. First, there were delays in commissioning certain capital projects, which had an impact on the payback and the internal rate of return. Second, there were delays in executing R&D projects, right? So there was some delays in executing capital projects and R&D projects. And lastly, we had slightly higher than expected attrition for a segment of our employees. A lot of employees left, or there was a lot of attrition. So a lot of new employees joined and a lot of employees left. So attrition is something which I always watch out for. तो क्या रीजन attrition के पीछे, ये like someone can also ask in the conference calls, but this is one key thing to look out for. In all these three areas, corrective measures have been taken to improve our performance, right? So these were the three areas where they have lacked, like delay in like capital projects, that is mainly capex commissioning. Second is attrition, high attrition rates, and third is delay in R&D projects. So one more thing is that delay in capital projects was due to capex, due to workforce not being present, right? And secondly, जो R&D की बात करें उसमें क्यों delay हुआ, that so to improve that, they have established cross-functional teams and invested in skill development and hired more people and strengthened their information system for early identification of impediments and specific action. So this is the second way they are trying to improve. And third is कि attrition को कैसे reduce कर रहे हैं, तो good thing is कि that they realize we have a problem. To reduce attrition, we did a detailed analysis of the concerned employee segment to arrive at the reasons behind attrition. Since then, we have implemented certain SOPs and protocols, made the line managers more accountable,
and set up additional communication platforms between direct supervisors and people on the shop floor, so that supervisors can better understand the issues at the ground level and take suitable action for their resolution. So this is the second key reason why. So this is one of the corrective measures they are taking. Businesses are living things, so there will be some problems all the times, and there will be some positive black swans as well. So we have to keep watching out for what are the risks that the business is dealing with, and how the business can solve all those risks. Because doing business is nothing but mitigation of risk and seizing the opportunity. So what measures are being taken to drive operational efficiencies, right? So again, my focus is more on how they're dealing with the GDS vertical and the CMS vertical. So we have a dedicated and strong team for implementing product lifecycle management of our GDS portfolio. Under this, focus is on optimizing processes, improving yields, and enhancing productivity. During the year, concrete steps were taken for products such as this one, the second product they have, third product they have, and the fourth product they have, and Dolzolamide, and the last product that they have, to make them more competitive, not only in terms of cost, but also in terms of availability and capacity. So they are basically trying to make their products more competitive in terms of capacity and availability. So one key thesis of Unit 3 also is that Unit 3 will lead to economies of scale in the business, because they were always capacity starved. तो क्योंकि यूनिट 3 अब काफी ज्यादा कैपेसिटी लेके आ रहा है, आई थिंक 230 to 250 किलोलीटर्स की कैपेसिटी और ऐड हो रही है, दैट इज 1/3 ऑफ द बिजनेस. तो दैट विल एक्चुअली हेल्प इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड कुछ एपीआई जो कमोडिटीज हैं, तो कमोडिटी बिजनेस में इधर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर विंस, एंड लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही होता है जिसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो. तो मे भी इस बिजनेस के अंदर ये चीज भी हो सकती है, जो इनका जेनेरिक ड्रग सब्सटेंस का बिजनेस है वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाए, एंड मोर ओवर ये जो बिजनेस है वहां पे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाए, एंड यहाँ पे इनके मार्जिन एक्सपैंड भी हो सकते हैं. तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, बट दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट कैन एक्चुअली प्ले आउट इन द बिजनेस. Pandemic. So they tell that COVID-19 outbreak is true for companies globally, and Union had to deal with this challenge. So almost every company is going through this, and let's see what they have to tell us about the business, right? So I think one key challenge over here was of China and the key starting materials जिसकी हमने बात करी थी. So this is a part of the framework of business risk and management about risk. With China being the epicenter of COVID-19 outbreak and a supplier of some key starting material and intermediates for certain APIs, raw material supply chain for API sector was disrupted. In Yulin's case, planned and strategic changes we have made to our supply chain over the past 3 years, including shortening the supply chain and de-risking of the vendor base, ensured minimal disruption to our operations and timely delivery of our products, right? So the de-risking operations they've taken over the past few years. So one interesting question again that is over there, that how is Newland basically dealing with the challenge of business continuity? So basically they are carrying out the programs of vaccination in full earnest, and so vaccination is going on throughout the world. And let's just see what they have to say, that so they were not significantly impacted by supply chain disruption, because this time they have found other alternative suppliers as well. Just going down and focusing on the CMS business, which is I think one of the key criteria or the thesis of investment, and what are the growth drivers for Newland for FY22 and beyond. So during the year, we operationalized Unit 3, a manufacturing facility that we had acquired 3 years ago. So this was acquired 3 years ago. And integration of this facility with our operation has enhanced our capability and capacity in scaling up molecules and management projects. Unit 3 will continue to be an important driver of our continued success, and we are prioritizing optimization of capacity for agility, enabling quick, flexible response to customer needs, right? So basically they have created more capacity in Unit 3, and यहाँ पे capacity अब commercialize हो चुकी है. तो अब interesting चीजें हो सकती है इस business के अंदर, and अब देखते हैं ये CMS business बारे में क्या बताते हैं. The number of CMS projects that we are executing has been steadily increasing. This reflects the trust that our existing customers are placing in us, as well as recognition of our Newland's capabilities by new customers. Strong pipeline of CMS projects, currently 78 active projects. So इनके CMS की जो pipeline है उसके अंदर 78 active projects हैं, which has increased by 2 projects year on year. तो last year 76 projects थे. With 24 late stage development projects and continued emphasis on targeting molecules in later stage of the clinical cycle.
positioning us well to grow our revenue in the coming years, building deeper competencies and capabilities. तो बेसिकली जो लेट स्टेज मॉलिक्यूल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, यहाँ पे आपका जो अश्योरिटी ऑफ जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल की जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है. एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि जो लाइक फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर लाइक न्यूलैंड, इनके लिए भी क्या एडवांटेज होता है इसके अंदर कि ये लोग भी अगर ऐसे पाइपलाइन में, अगर इनके प्रोजेक्ट्स इस स्टेज ऑफ पाइपलाइन में हो, तो इन लोगों के लिए क्या बेनिफिट है कि इनकी जो रेवेन्यू जनरेशन है उसकी विजिबिलिटी काफी क्लियर हो जाती है. तो यहाँ पे हम एक बार इसकी जो वैल्यू चेन है वो देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की, एंड लेट्स जस्ट सी दैट हाउ इट हेल्प्स द बिजनेस. जस्ट अ मोमेंट. ऑलराइट, ओवर हियर. राइट, सो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, तो बेसिकली दिस इज द फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड द कमर्शियल लॉन्च. अगर मेरे ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं तो क्वांटिटी भी जो रिक्वायर्ड है एपीआई की वो भी ज्यादा बढ़ जाती है. So this leads to better margins and better revenue visibility for companies like Newland, Heikel or other contract manufacturers. यहाँ पे 100 से 1000 किलो का एपीआई रिक्वायर्ड है, यहाँ से more than 1000 किलो का एपीआई रिक्वायर्ड है. Whereas earlier में कम क्वांटिटी के जो एपीआई that is required. So this is again interesting to see that यहाँ पे अगर इनके ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं इस स्टेज ऑफ पाइपलाइन में, तो जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ हॉकी स्टिक बिजनेस. अगर एक बार इफ इट क्लिक्स तो द ग्रोथ इज जस्ट लाइक अ हॉकी स्टिक ग्रोथ. I think now just coming to the Q&A from Saharsh, who's the vice chairman and the managing director of the company. So let's see what Saharsh has to say. Just a moment. So again over here interesting thing becomes कि हम अगर BRM framework लगाएं business risk management पे, तो let's see कि नए products कौन से आ रहे हैं, क्या क्या इनका focus चल रहा है. So in GDS business, formed collectively by our prime and specialty APIs, growth was led by our ability to scale up products that command a strong market position, right? So they have commercialized the Unit 3, तो इन्होंने जो Unit 3 है उसको commercialize कर लिया. And यहाँ पे 2 APIs are currently being shipped to certain markets from Unit 3. तो Unit 3 से 2 API भी ship करने start कर दिए. The manufacturing extension has also given us the headroom to accommodate higher volumes for other molecules in Unit 1 and Unit 2. क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था, कुछ मॉलिक्यूल अब जो यूनिट 3 है इस पे शिफ्ट कर सकते हैं, एंड जो यूनिट 1 एंड 2 है जो ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश्ड है, अब यहाँ पे कोई और टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. These measures have enabled sustained product scale up along with focused efforts of our sales team driven customer acquisition. In the prime segment comprising mature APIs, तो prime segment इनका lowest margin segment है. They typically face high competition. Growth was largely attributable to the key molecules of the name of the molecules over here. And a specialty segment includes specialized high value APIs which generate higher margins due to complexities. So multiple molecules some of the molecules like entacapone, right, and some of the molecules like dorzolamide. So these have led the growth momentum in the specialty segment. Now let's see going forward what's their strategy. So strategy is a part of business, right? So business and management. The business risk and management में strategy किस चीज का part है? Just going down, that through product life cycle management, this will enable us to deepen our engagement with existing customers as well as reach out to new customers. Led by expertise of our R&D team, we are also focusing to bring differentiated products to the market. So they're focusing to launch new products which could be differentiated in nature. But this is all a part of narrative. At the end, it has to show up in numbers or there somewhere. So their focus has to launch products where they have an edge in terms of technological complexities, or instead of a quantity-led one, we will be able to better serve the specific needs of the customers. So they have added an API by the name of Sugama Dex, and they have also added an API by the name of semaglutide, right, to their portfolio, which is consistent with their approach of growing their differentiated offerings. These measures, even as we foray into new markets while deepening our penetration in existing geographies, should position the GDS business for sustained growth, right? So they are positioning their GDS business for sustained growth. Now let's look at the CMS business, which is the key part of the thesis कि यहाँ पे हमें क्या बताते हैं, right?
that the CMS business continues to drive our overall revenue momentum, and this growth being attributable to both commercial as well as development products. Further, we witness growth in scale-up projects and higher projects coming up for validation. तो यहाँ पे बेसिकली अगर ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं CMS बिजनेस में, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट ऑप्शनैलिटी बिजनेस, कि अगर एक भी मॉलिक्यूल या एक भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो वो कंपनी का जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो चेंज कर सकते हैं. एज ऑफ 31 मार्च 2021, 78 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, 17 कमर्शियल स्टेज में है एंड 20 डेवलपमेंट स्टेज में है, और बाकी सारे अर्ली क्लिनिकल ट्रायल्स और फेज 3 के अंदर है इस टाइम पे. सिंजीन वाली वीडियो आई थिंक आपको जरूर देखनी चाहिए अगर इन डेप्थ समझना है तो. जस्ट कमिंग डाउन, so they are focusing on building the CMS business. And one more interesting thing to focus over here is कि इस बार इनको यहाँ पे 2 या 3 4 या 5 और जो molecules है वो मिले. Let's just read this. That there is a favorable trend for Neuland as late stage projects that have a relatively low risk failure and a short commercialization cycle versus projects in early development phase इनके लिए ज्यादा आ रहे हैं, बिकॉज न्यूलैंड लेट स्टेज प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. मोरओवर, व्हेन इट कम्स टू कमर्शियलाइजेशन, global innovators prefer to go with an outsourcing partner who has been also involved in development phase, as it eliminates the need for technology transfer. Extensive knowledge gained by outsourcing partners along the development cycle also makes product commercialization more seamless and simpler. During the year, we have made significant progress with 4 to 5 late stage projects. तो फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आ सकती है अगर ये 4 से 5 जो लेट स्टेज प्रोजेक्ट्स हैं अगर ये कमर्शलाइज हो जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमें बता रहे हैं कि विच आर एक्सपेक्टेड टू गेट कमर्शलाइज्ड बाय आवर कस्टमर्स इन नेक्स्ट 12 to 24 months. So this underpins our capabilities in commercializing products consistently and efficiently with the highest level of quality. So basically अगर ये 4-5 नए प्रोडक्ट अगले 12 से 24 महीने में कमर्शलाइज हो जाते हैं, so this can lead to a lot of growth in the business, because यहाँ पे अगर ब्लोरस के केस में देखें 8 साल से ज्यादा हो गए CDMO बिजनेस को स्टार्ट करें, इसके केस में भी 6-7-8 साल हो चुके हैं, मतलब 2012-2013 से अभी तक 8 to 9 years हो चुके हैं. तो अगेन अगर यहाँ पे अब क्योंकि बिजनेस का जेस्टेशन पीरियड ओवर है, तो इफ समथिंग क्लिक्स, क्योंकि क्लिक होने के चांसेस हैं, क्योंकि 4 से 5 और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं लेट स्टेज में चल रहे हैं, इफ समथिंग क्लिक्स, so we can get a Heikel like outcome or a Naveen Fluorine like outcome. So let's see if it clicks or not. तो यही हमारी thesis है Neuland Labs के केस में, right? So just coming down and just looking at the board of directors. So this is the non-executive director. This is the executive chairman जो इन दोनों के father हैं, right? And these are both the sons who are working in the company. So this is just the board of directors, and these are the financial highlights of the business. And financial highlights को brief में discuss करके I think we'll go towards the question a student asked, and after that we look at Tata Elxsi's annual report. So this is the revenue growth of the business. So one key metric to track कि last 4-5 years में revenue grow कर रहा है या नहीं कर रहा. So in last 4 years revenue has grown by nearly 80%. Absolute revenue growth 80% की है. मेरा जो EBITDA growth है, EBITDA growth 100 करोड़ से 162 करोड़ आई है, तो मैंने 60% की है, क्योंकि इन 2 सालों में जैसे हमने देखा 3 ब्लैक स्वान इवेंट्स आ गए थे, राइट? तो 2020 वाज द ईयर जहाँ पे मीन रिवर्जन हुआ, और 2021 हैज बीन द ईयर वेयर द ग्रोथ हैज कम बैक. So let's see how far the growth can go this time, because last time EBITDA margin 18% था, इस बारी 17% आया 2021 में. If it expands to 22 to 24%, then it becomes really interesting to watch out in this business. EPS of the business has grown like so, but last 4 years में देखें तो almost 50 to 55% expansion है EPS के अंदर. Yes, profit after tax also seems to be similar, right? And current ratio business की improve हो रही है, which signifies that the liquidity ratios of the business is improving basically. ROC देखते हैं बिजनेस का, तो ROC बिजनेस का 16% से गिर के 4% पे आ गया, 3% पे आ गया, 7% पे आ गया, बट नाउ इट इज गोइंग बैक अप, 13% के आसपास पहुंच चुका है. एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर ROC आल्सो फॉलिंग इज दैट फिक्स्ड एसेट टर्न्स हैव रिड्यूस्ड. बेसिकली मैंने बहुत ज्यादा कैपेसिटी लगा दी है, बट अभी उसके मेरे को ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी सिटिंग ऑन द बैलेंस शीट, व्हिच इज लीडिंग टू लोअर ROC एज वेल. But in spite of that, their return on capital has come up to 13%.
So it can change buckets from SOIC bucket 4 to SOIC bucket 3. So let's see if that happens. If it happens, the stock is in for, like, the stock can be very, very interesting even from here. And debt to equity ratio has improved. So leverage ratios have improved of the business, showing healthy signs of cash generation as well. And let's see and let's read more about the business. So over here, I'll just showcase the financial highlights to you and the capex the company has done, where the company is spending the entire capex. तो इन्होंने ये new instruments procure करे हैं. So these are some of the instruments they have procured इस बारी capex के अंदर. So one question that was asked in the conference call was that in spite of doing a lot of capex, our capacities haven't expanded. So management pointed out that like capacities haven't expanded though, but we have done a lot of capex on acquiring new capabilities. So they have set up one more peptide lab. So again, this is one of the con calls in FY19 where they mentioned that they could be getting a separate long-term contract for peptides. So there is a possibility of that happening. And this could be one of those indicators where they've set up another peptide lab. So if that happens, so again, could be an interesting outcome. So these businesses like Hykel, Newland Labs, Naveen Fluorine, these are just sitting optionalities. If something clicks, then you get parabolic outcomes. जैसे Hykel के case में, it went up from 170 to almost 470 to 500 within a jiffy, like within 30 days after the contract was announced. So they've added 7 fume hoods, including lab area of 9,800 square feet with 25 additional chemists. तो अब कोई फ्यूम लैब्स तभी ऐड करता है जब उसको बहुत ज्यादा लगता है कि और प्रोजेक्ट्स आने वाले. जैसे एस्टेक लाइफ साइंसेस के केस में देखा, उन्होंने फ्यूम लैब्स क्यों और वहां पे लगाई बहुत सारी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरी फ्लो आएगा. सिमिलरली इस बिजनेस के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि दे आर एडिंग मोर फ्यूम लैब्स, राइट. सेकेंडली यहाँ पे अगर हम एक और चीज चेक करते हैं, सो दे हैव लाइक डन मोर कैपेक्स फॉर लैब रिएक्टर्स, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स, लाइक these are some of the basically terms which are used in the pharma business. तो ये मैं क्या करूंगा इसके बाद कि मैं जितनी भी टर्म्स है इनको गूगल पे सर्च करूंगा एंड देखूंगा एक्चुअली में इसका यूज क्या है, इसका एंड यूज क्या है, राइट. सो दीज आर द न्यू कैपेबिलिटीज दैट द मैनेजमेंट इज एडिंग. एंड मेरे को पेप्टाइड लैब वाला काफी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज सम टाइम अगो दे आल्सो मेंशन दैट वी कैन गेट अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेप्टाइड्स. एंड दिस इज द three units of the business. One is unit 1, second is unit 2, and third is unit 3. Unit 3 में 271 kiloliters की capacity है. It's the second largest unit they have. It is close to 1/3 of the capacity of the business. Then they over here they are adding the hydrogenation reaction volume, and they have also added cryogenic reaction volume. So these are basically different type of chemistry reactions, right? And I think becomes interesting कि यहाँ पे capacity 1/3 है, but अभी यहाँ पे utilization नहीं है. अगर यूटिलाइजेशन स्टार्ट होती है तो क्या हो सकता है इस बिजनेस के अंदर, अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज कैन किक इन. लेट्स सी इफ इट किक्स इन दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर एक लंपीनेस वाला एलिमेंट तो रहता ही रहता है. सो आई थिंक दैट इज इंटरेस्टिंग टू सी. एंड यहाँ पे एक बार 10-year ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं बिफोर वी गो टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ टाटा एलेक्सी. Looking at the past 10-year track record of Newland Labs, so just opening over here. So the sales of the company, that is the standalone sales of the company. तो ये 2012 में almost 449 crores की थी. And one of the reasons why investors miss out on a lot of companies because वो इसी चीज को देख के यहाँ पे इग्नोर कर देंगे कंपनी को. बट एक्चुअली में जब हम इनकी दूसरी एनुअल रिपोर्ट खोलते हैं 2014-2015 की, तो यहाँ पे दे क्लियरली मेंशन कि एट मैक्रो लेवल it does appear that we have stagnated between FY12 to FY16 कि sales grow नहीं करी. But this does not layer the evolution that has happened over these years. 2011 we used to sell over 1220 tons of API with average realization of $53 per kilogram. माने हम 1220 tons का API बेचते थे, but उसकी जो average selling price थी वो $53 per kilogram थी. But if you look at the numbers in 2016, we are selling close to 600 tons of API at $118 a kilogram. So basically the business has moved up in terms of value, right? In terms of value, the business has moved up, which means our realization per kilogram is up by 120%. Another indicator of evolution is
Our top selling molecule, which earlier used to contribute 56% of our sales, now is less than 20%. Clearly indicates the strategic growth we have always talked about. Our strategy has always been to continue our focus on niche APIs and growing our CMS business and maintaining a dominant position, right? So this is something which one has to see, and so their EBITDA margins again have moved up to 16 to 17% from low teens. So this is one of the reasons कि इस कंपनी की जो सेल्स है वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी, क्योंकि बिजनेस मिक्स अंदर से चेंज हो रहा है. बिकॉज बिजनेस मिक्स इज चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड, what we'll also see is that कि कंपनी का जो EBITDA margin है that is improving, right? So over here if I look at EBITDA as a percentage of income, अगर मैं decade का compare करूं तो पहले ये एक सिर्फ इनके पास जो GDS में प्राइम बिजनेस है, it was majorly into that. So from 10% their EBITDA margin has moved to 17%. Now it remains to be seen कि next 3, 4, 5 years में क्या ये 22-23% तक जा सकता है या नहीं जा सकता. If it goes to there, then things will become very, very interesting, right? This is their this is their ROE, right? So 17.33% के आसपास, which is excluding goodwill, I think so, return on tangible net worth. And again, this used to be at 20.73%. So return on capital employed has moved from 16%, so it fell because of two black swan events, right? And now it is reverting back to mean. अगर ये reversion to mean इसके अंदर अच्छा हो जाता है and basically we get those margins expanding, so this company seems very well poised at the moment. And if I just look at the goodwill, so right now there's a goodwill of close to 279 crores on the balance sheet. And this goodwill has also been pointed out by the auditor, because close to FY17 में इनकी जो इनकी R&D वाली सिस्टर कंपनीज थी, इन्होंने उसको अपने साथ मर्ज करा था. तो their reason for merging the companies was clear कि बेसिकली जो प्रमोटर की एंटिटीज हैं वो एक के अंदर आ जाएंगी तो हमारे लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर गेट सिंप्लीफाइड. एंड सेकंड रीजन व्हिच दे गेव फॉर मर्जर वाज कि काफी ज्यादा सिनर्जी आएगी उसके अंदर बेसिकली, क्योंकि वहां पे R&D का काम चल रहा है, वहां पे पेप्टाइड्स का भी काम चल रहा है, तो जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के लिए उनके लिए भी बेटर होएगा. बट अगेन देयर इज ऑलवेज अ कॉन फॉर दिस, because goodwill is close to 20% of the total assets. तो 20 to 21% के आसपास गुडविल है. तो अगर कुछ इम्पेयरमेंट होता है तो बेसिकली दैट कैन लीड टू इरोजन इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी. तो नेटवर्थ का कुछ 35% के आसपास गुडविल है. सो दिस इज वन ऑफ द की रिस्क टू द थीसिस. पर ये रिस्क ज्यादा वहां होता है उन बिजनेसेस में जहाँ पे अगर किसी कंपनी ने कोई चीज अक्वायर करी होती है वो एकदम ही आउट ऑफ द डोमेन होती. तो जैसे स्टूडेंट्स को मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, एक स्टाफिंग कंपनी का जिसने फुटबॉल क्लब अक्वायर कर लिया था, तो एक्चुअली वो उसके लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं था. दिस सीम्स टू बी इन लाइन ऑफ द बिजनेस, बट येस इट डज सीम टू बी ऑन द हायर एंड ऑफ थिंग्स कि गुडविल एक्चुअली एसेट्स का 20% है एंड इक्विटी का 35% है. सो दिस इज वन की मेट्रिक विच आई विल ट्रैक की इफ दे इम्पेयर द गुडविल और नॉट, एंड गुडविल की अजम्पशंस की कितनी अग्रेसिव है. तो जो ऑडिटर है उनकी भी ऑब्जर्वेशन इनकी एनुअल रिपोर्ट में से यही है. Rest of the things seem to be very interesting because इस बार अगर हम चेक करते हैं तो their cash flow from operations have improved a lot. Just opening from screen, right? कि इस बार इनका cash flow from operation has gone up to 189 crores. So CFO wise, again the company seems to be on a strong trajectory. Financial metrics are improving, ROC is improving, bucket might change, and earnings growth might be very strong, and capex has already been done. So these are the triggers of variant perception in the business of Newland Labs. Now let's move to the annual report of Tata Elxsi, and over there also we'll try to cover as much qualitative aspects as we can. Just opening Tata Elxsi's annual report from Tijori's knowledge base. So just over here, right? So over here as well, we look at the three key divisions where they operate in, and we'll also read what the chairman has to say. And these are the table of contents. So let's just read what the chairman has to say. That just a moment over here, right? So your company generated operating revenues of 1826 crores in FY21, registering a growth of 13.4% year on year. So हमारे revenues में 13.4% की growth आई है. PBT was 512 crores, a growth of 45.3%, crossing 500 crore mark for the first time in the company's history. फर्स्ट टाइम कंपनी की हिस्ट्री में 500 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, राइट? एंड कंपनीज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर स्टूड एट 368 करोड़, अ ग्रोथ ऑफ 43.7%.
In the coming year, the continued impact of COVID-19 pandemic, stagnant economic performance, and foreign exchange rate fluctuations, and a downturn in some sectors would also pose challenges to economic growth. We expect advanced economies to recover faster, right, and supply chains to improve. So let's just see what the company has to say about what they're into. Just a moment. So I think they are into 3 verticals, which becomes interesting to read. Is that they are in 3 verticals, that is transportation, media, broadcast, and communications, and healthcare, right? These are the 3 verticals in which the business is. And if we read between the lines, let's see what the company has to say. That the customer base is diversified in terms of geographies we operate in and currencies we bill in. This mitigates the risk from geopolitical and currency volatility to a certain degree. So past year में travel restrictions थी and IT companies में we have seen a lot of margin expansion. And ये margin expansion की क्या sources हैं, हम एक बारी टाटा एलेक्सी के जो other expenses है वहाँ पे आके जरूर देखेंगे. So over here, one interesting thing to notice कि in Zinnov zones of 2020 report, company was ranked in leadership zones in automotive and media and communication industries. And company was also recognized as an emerging niche leader in innovative technologies like digital engineering, artificial intelligence, and IoT. So Zinnov is a consultancy which ranks IT companies according to their different capabilities. So being ranked in the leadership zone, तो basically अच्छी बात है कि जो इनका automotive vertical है और जो इनका media and communication का vertical है, उसके जो leadership zone है उसके अंदर rank करें. तो काफी बारी जो customers हैं वो इन consultancy की जो reports है उनको ही देख के जो project है देखते हैं कि किस company को कौन सा project मिलना चाहिए. So I think this becomes interesting. And over here, one very interesting thing, so this represents what Tatas are about. And I'm pleased to inform you that Board of Directors have approved a final dividend of 240% for the year 2020, along with one-time special dividend of 240% for your consideration. So this is very interesting because in con calls they mentioned that since we are going through pandemic, so we wanted to reward the shareholders for basically being with us for the long period of time. Just going down. So this is the board of directors. So like this is how the board of director looks like. So over here, just a minute. So some of these IT businesses are actually a beneficiary of a mega trend that is going on. What is that mega trend? That is of digitalization. That increasingly हम दुनिया को देखें तो दुनिया जो legacy technologies हैं उससे the world is moving towards more and more digital. Digital is what basically usage of analytics, like basically cloud adaptation and other things. तो हमने happiest mind की वीडियो में जो बात करी है. So digital technologies like mobility, Internet of Things, artificial intelligence, and cloud-based applications are being integrated into consumer tech context, services, and products. And those technologies are creating huge job opportunities to drive operational efficiency. अब जो टाटा एलेक्सी है वो यहाँ पे क्या करता है कि टाटा एलेक्सीज डिजाइन डिजिटल brings together a global and diverse team of strategic thinkers, consumer insights experts, award-winning designers and technologists and digital experts. And their network of design studios, innovation hubs, and center of excellence for digital technologies help enterprises reimagine their products and services from strategy insights, service designs, and interaction design to technology and implementation and integration. तो टाटा एलेक्सी जैसे हमने बात करी थी अपनी वीडियो में, इट्स एन ईपीडी प्लेयर. तो ईपीडी में इस टाइम पे काफी मैसिव टेलविंड्स आ रखी है. तो इनकी जो टेलविंड्स एक बार उसकी बात करते हैं तो इनका एक जो इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन का सेगमेंट है उसके अंदर इनका मतलब सो दे हैड वन की हाईलाइट वाज दैट दे वर सिलेक्टेड बाय डिश टीवी टू डेवलप ऑर्बिट. दैट इज अ न्यू यूजर इंटरफेस फॉर बोथ इट्स ब्रांड्स डिश टीवी एंड D2H, राइट. सो जो डिश टीवी का न्यू इंटरफेस है उसका जो डेवलपमेंट है वो इनको मिला. एंड साथ साथ जो इनका हेल्थ केयर वर्टिकल है यहाँ पे की हाईलाइट क्या है, तो यहाँ पे अगेन इंटरेस्टिंग थिंग इज that healthcare vertical is growing at a really fast rate. माने 20, 25, 30% CAGR पे इनका जो healthcare vertical है इसमें इस टाइम पे ग्रोथ आ रही है. So Tata Elxsi was selected by B. Braun company and one of the world's leading manufacturers of medical devices as its global engineering services partner, right? So B. Braun
company. So this is the name of the company, and this is one of the world's leading manufacturer of medical devices. And they rolled out an industry-first outcome-based risk assurance business model for large regulatory transition programs for existing and new customers, right? So this is their second product vertical, that is of healthcare. तो तीसरा जो मीडिया ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन का है, तो बेसिकली यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन का है, दैट इज अ लोअर पार्ट ऑफ द बिजनेस. मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज में जो ट्रांसपोर्ट वर्टिकल है, मीडिया ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन है, एंड जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, these are the main verticals of the company clubbed under EPD services. तो यहाँ पे again they have positioned in the leadership zone in communications by Zinnov Zones 2020 report. And Google Widevine has chosen us as a 3PL certification partner to offer safe premium content protection for broadcast media, consumer and automotive application. माने फिर अगेन ये जो Zinnov zones है, उसका जो लीडरशिप जोन है उसके अंदर आए हैं इस वर्टिकल में भी, which is extremely good and extremely heartening to know. And third is जो उनका ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल है, वहां पे भी अगेन they have been positioned as they have been positioned in the leadership zone in the automotive sector by Zinnov Zones, which is again a consultancy which ranks different IT companies according to their capabilities. And they have launched a global engineering center focused on innovation and drive digital transformation and growth for Schaeffler Group. तो Schaeffler is a German group, उसके लिए भी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका भी इन्होंने एक इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च करा है. सो अगेन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स. अब टाटा एलेक्सी का जो सिस्टम इंटीग्रेशन बिजनेस है, दिस इज हार्डली 3-4% ऑफ द बिजनेस, तो दिस बिजनेस डजंट मैटर. बट यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर मेगा ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिन सेक्टर्स के अंदर ये है, एक बार उसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मेगा ट्रेंड आ रहे हैं MD&A के अंदर, दैट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर. जस्ट कमिंग टू MD&A, जस्ट कमिंग डाउन, राइट. तो MD&A के अंदर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन मेरे को पढ़ने को मिली कि इस बिजनेस के अंदर किस टाइप की ग्रोथ आ रही है, कितनी ज्यादा ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे. जस्ट अ मोमेंट. तो दिस इज द MD&A, एंड MD&A के साथ साथ एक बार यहाँ पे हम एक बार इनका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी देखते हैं. सो दे हैव पेड आउट क्लोज टू 480% ऑफ dividend, that is on the face value of the share, and this is basically close to 480 rupees of dividend which they've paid out. So sorry, 48 rupees per share of dividend which they've paid out this time. Becomes really interesting. Face value of a share is 10 rupees, so they've given 480% of dividend on the face value of the share. And this year 2020 was disrupted by pandemic related sharp declines in growth across industries. So they're basically talking about the macro. But यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को एक क्या मिली, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को जो काफी मिली कि जिस एरिया में ये ऑपरेट करते हैं इस टाइम पे, यहाँ पे काफी फास्ट ग्रोथ आ रही है. That according to Zinnov, global ER&D was US 1.4 trillion and it is expected to grow at a CAGR of 11% to 1.9 trillion by 2023. तो जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज ग्रोइंग एट 11% CAGR, जो बाकी IT सर्विसेज के सेगमेंट से फास्टर है, राइट. दिस ग्रोथ इज फास्टर देन the other segment of IT services. And here they have basically 3 verticals within this. तो अगर हम इनका यहाँ पे जो एक क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन भी देखते हैं, जो हमें IT कंपनीज भी देखना चाहिए कि टॉप 10 क्लाइंट्स का कितना कॉन्सेंट्रेशन है. तो नंबर 1 क्लाइंट जो इनका जैगवार है उसमें कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो गया. और सो दिस वाज वन ऑफ द की पेन पॉइंट्स इन द बिजनेस. जब भी जैगवार डाउन साइकिल के थ्रू जाता था, टाटा एलेक्सी का भी जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती थी. बट अब वो भी 11.8% हो गया क्योंकि टाटा एलेक्सी ने अपना जो हेल्थ केयर का वर्टिकल है उसको काफी फास्ट ग्रो कर लिया, एंड जो बाकी इनका मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग का वर्टिकल है उसको भी काफी तेजी से ग्रो कर लिया. एंड एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन में इनके अगर हम डिफरेंट वर्टिकल्स देखते हैं इस टाइम पे इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ चल रही है, तो यहाँ पे दे हैव गिवन वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स कि जो ऑटो वाला पार्ट है इनका, इंडस्ट्री कुछ $157 बिलियन की हो जाएगी बाय 2023. तो यहाँ पे इंडस्ट्री विल रिमेन फ्लैट, राइट, बिकॉज ऑटो इज मोर और लेस अ सिक्लिकल इंडस्ट्री. बाकी अगर हम इनका जो मीडिया ब्रॉडकास्ट एंड जो हाईटेक वाला सेक्टर है जहाँ पे सेमी कंडक्टर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड टेलीकॉम आ रहा है, तो यहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग 8.7% CAGR growth from 347 billion to 484 billion. And now coming to the last one, that is of healthcare, which is again a mega trend because healthcare devices are being digitalized.
So over here, they are expecting a growth of 9.8% industry-wise, from 31 billion to $45 billion. So again, this ER&D vertical is growing very, very fast and at a very fast clip. So makes it a very, very interesting business to keep tracking. If something or the other happens on the market level, so this business remains very interesting. But यहाँ पे अब IT businesses में इस बारी एक interesting चीज क्या हुई है, क्योंकि these businesses have cut their costs down, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि जो overhead cost थे इनके, तो मार्जिन एक्सपेंशन का एक रीजन ये भी था क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो गए. तो क्या एक्सपेंसेस थे एक बार ही देखते हैं. तो इनका जो कम्युनिकेशन एक्सपेंस था that has reduced, बट वो सिर्फ ऑलमोस्ट 2 करोड़ से रिड्यूस हुआ है, तो इतना ज्यादा रिडक्शन नहीं है, 20% के आसपास है, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. पर इनलैंड ट्रैवल एंड कन्वेंस एक्सपेंस 7.9 करोड़ से 2 करोड़ आ गए. So that is a reduction of 74%. So a lot of these IT businesses are seeing margin expansion based on cost reduction as well. This is why sale growth 14% आई है, whereas profit after tax growth is somewhere close to 44%, right? Sales growth are 13%, but PAT growth is 44% because the cost has fallen for the business. And let's look at this, that overseas travel. Overseas travel has reduced from 68 crores to 26 crores. That is a reduction of nearly 60%. Advertisement and sales promotion, that has again fallen by 20%. So more or less, we have seen a reduction in costs. And अगर ये cost वापस आती है, तो maybe these margins are not sustainable. So this is one thing to be careful of. Do let me know in the comment section कि आपको ये कैसा लगा annual report का review, and क्या हमें ये Tata Consumer, Syngene and जो Laurus Labs की annual report आएगी, and साथ अगर ITC की annual report आती है, उस पर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड सेकेंडली जो भी SOIC इंटेंसिव स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मास्टर क्लास ऑन वैल्यूएशंस कर रहे हैं ऑन द कमिंग सैटरडे, जिसमें हम अपना बुल बेस एंड बेयर सिनेरियो का एक्चुअली जो क्या नैरेटिव है एंड क्या रफ अप्रोक्सीमेशन है वैल्यूएशन का, वो डिस्कस करेंगे. एंड साथ साथ हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे कि एक डीप सिक्लिकल वाला वैल्यूएशन बारे में कैसे सोचेगा, एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग वाला वैल्यूएशन बारे में कैसे सोचेगा, एक गार्प इन्वेस्टर कैसे सोचेगा जो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस ढूंढता है, या फिर एक वैसे इन्वेस्टर वैल्यूएशन बारे में कैसे सोचेगा which is attracted towards a lot of who is attracted towards a lot of basically undervalued place. So आपकी वैल्यूएशन की जो आइडेंटिटी है, आपकी जो एज एन इन्वेस्टर आइडेंटिटी है, वो आपके वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को ड्राइव करती है. एंड दिस विल बी अ मास्टर क्लास व्हिच विल बी डूइंग विद द स्टूडेंट्स. तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताइए कि अगर आप चाहते हैं और एनुअल रिपोर्ट्स का रिव्यू किया जाए या ना किया जाए. And Sunday we are coming out with a video on the Dhandho Investor Framework in the Indian context. Thank you for joining us. Hope to see you in the next session of SOIC.